Welcome back to another video by 12th Istik. In this video, we will be discussing Organization of Commerce and Management for Standard 12, Chapter number 1, Principles of Management. In my previous video, we have already covered with Frederick Taylor's Scientific Management Theory, and this is the last topic to end this chapter. The name of today's topic is Techniques of Scientific Management. So guys, let us begin. It is on page number 10 of your textbook. Techniques of Scientific Management. Some of the major techniques of scientific management are as follows. So let us have a look at what are the main and the important techniques of scientific management. The first one is the work study. Before assigning the work to the available workforce, proper work study should be done by the management. So this means that before the work is being given to the employees, to the managers, which is called as the workforce, proper study of work should be done firstly by the management. So this says that जो कुछ भी काम रहता है वो मैनेजर्स को, वो वर्कर्स को देने के पहले क्या वर्क है, क्या टाइम लगेगा, क्या नेचर ऑफ वर्क है, तो ये सब एक प्रॉपर स्टडी मैनेजमेंट को पहले करना चाहिए. Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of the various activities or function. So ये जो वर्क है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज, वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए. ऑल्सो ये वर्क को इवेल्युएट करना, असेसमेंट करना, क्या फंक्शंस होंगे वर्क को, सो इसकी भी जानकारी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क स्टडी इज बेस्ड on the technique such as time study, motion study, method study and fatigue study. So ये जो work study है, it is being divided into different part. The first one is the time study. Time study मतलब कितना टाइम लगेगा वो वर्क को complete होने के लिए. Second one is the motion study and method study. That is कौन से methods use करेंगे to complete that work. And the next one is fatigue study. That is whether breaks are being given, whether there is a proper condition of working. So now let us go on with the first one, that is the time study. It is the technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given work. So time study क्या होता है? Time study, it is a technique to observe, that is to देखना, and also to record the timing, whether एक काम complete होने के लिए कितना समय लगता है वो. With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. So this time study helps the management or helps the managers to know that how much time is needed, कितना समय is required to complete one given work. It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under given condition. It is useful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work. So this time study, it also provides a proper schedule. That is ये टाइम में ये काम खत्म होना चाहिए. So it gives a record कि कितना टाइम लगता है ये काम को खत्म होने के लिए, अगर डिले हो रहा है तो कितने टाइम का डिले हो रहा है. So all this is covered under time study. Then we have the B1, that is method study. There is always various methods of completing the task. अभी अगर एक काम हम लोग को दिया है तो हम लोग वो काम बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं. So there are various methods of doing tasks. For best quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager. So अगर एक वर्क को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है, विद बेस्ट क्वालिटी, विद बेस्ट सर्विस कंप्लीट करना है, तो इट इज़ a challenging job for the managers, because managers
will give instruction to the workers and the workforce that how the task is to be done, in which method it has to be done. It helps in reducing the wastage of time, raw material, and in improving the utility of all resources as per pre-defined objectives. सो अगर एक काम को सिस्टमैटिक मेथड से कंप्लीट किया जाता है तो जो वेस्टेज है रिसोर्स का वो भी नहीं होगा, एक प्रॉपर टाइम लिमिट में भी वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा, एंड द रिसोर्सेज दैट इज बीन यूज्ड विल आल्सो बी अ very good, and the work will be completed as per the objective of the company and organization. It is helpful in determining the method for handling the raw material, transportation, inspection, storage, etc. So ये जो method study है, it is also helpful कि कौन से method में काम करना चाहिए, कौन सा transportation use करना चाहिए to transport, what kind of storage is required. So all this is done by the method study. Then the next, that is, we have the C1 is motion study. The method, that is the study of required motion, means movement of an employee as well as machine while completing a particular task, is very important. So motion study is the study, that is the movement of goods, of employees, that is whether they have to complete the task, when they have to complete the task, in which manner they have to complete the task. All this is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. So जो unnecessary जो works है, unnecessary जो delays है, वो नहीं हो जाएंगे, and the work will be completed in a proper method and in a given time. It also helps in improving the efficiency of the employees. Motion study is used to know whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of tasks. So ये motion study, ये भी हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, या फिर देयर शुड बी अ चेंज इन प्लान, या फिर हम लोग वो प्लान को चेंज करके दूसरे तरीके से वो जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द D1 is fatigue study. Generally, long working hours without sufficient breaks, target pressure, heavy working tools and poor working condition result into physical and mental stress, that is fatigue. So generally क्या होता है कि suppose for example ऑफिस में बहुत काम होता है, so that is long working hours, you work for 10 hours 12 hours a day. फिर टारगेट का भी प्रेशर होता है कि इतना टारगेट कंप्लीट करना है, इतना सेल्स करना है इफ़ यू आर इन द कंपनी. फिर पुअर वर्किंग कंडीशंस लाइक प्रॉपर एयरी नहीं है. देन आप लोग को जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए, जो इसेंशियल टूल्स या फिर जो इसेंशियल इक्विपमेंट्स, जो इसेंशियल हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो चाहिए वो भी नहीं होता है. सो ऑल दिस रिजल्ट्स इन अ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस टू द वर्कफोर्स. Then it is an adverse effect on the health and efficiency of the employees. So अगर ये सब poor conditions है, ये सब adverse conditions है, टारगेट्स है, नो ब्रेक्स भी नहीं, आपको लंच ब्रेक भी नहीं दिया जाता है, टी ब्रेक भी नहीं दिया जाता है. सो इट क्रिएट्स एन इरिटेशन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज, ड्यू टू विच एम्प्लॉयज का हेल्थ भी खराब हो जाता है. The study of fatigue and steps to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employees. So यहाँ पे कहा जाता है कि the management should look after the long working hours, should give them breaks, working hours should be flexible, healthy working environment होना चाहिए आजू बाजू में. So it deals with that. Then we have the second point, that is standardization of tools and equipments. With the result of experiments conducted at workplace, Taylor advocates standardization of tools and equipments. So, कौन से भी ऑफिस या फिर in whichever companies there are tools, there are machines that is required. So this Taylor focuses on the machines and the equipments.
Standardized working environment and methods of production help to reduce the spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue amongst the workers, and it improves the quality of work. सो अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है, प्रॉपर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो इफ देर इज अ प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स भी वेस्ट नहीं हो जाएंगे. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इट विल बी वेरी प्रॉपर. Then the stress level, the mental, the depression level of the workers, that will also be under control. Thus it will improve the quality of the work that the employees are serving to the company. So this is with the point of standardization of tools and equipments. Turn to the next page, page number 11. We have the third point, that is scientific task setting. Taylor emphasized the need for fixing a fair day's work. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. So scientific task setting मतलब टेलर ने एक एम्फसाइज किया है कि वो लोग को एक एक दिन का वेज देंगे या फिर वो लोग को सैलरीज या फिर वो लोग को एक इंसेंटिव्स देंगे. By using this technique, employees will complete the task according to standards given, and management can keep proper control on the optimization of workforce. So by giving them fair wages or a day leaves, so that the work that the employees and the workers are doing, वो काम एक प्रॉपर टाइम में खत्म हो जाएगा, and it will result in the optimum utilization of resources, ताकि रॉ मटेरियल्स है, रिसोर्सेस है, वो वेस्ट भी नहीं हो जाएंगे. देन द फोर्थ पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स. सो जो कंपनी एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट पीपल है, वो लोग एक राइट व्यक्ति को, एक करेक्ट व्यक्ति को वो उसके राइट पोजीशन में, राइट जॉब में बैठाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर. वो व्यक्ति को वो लोग सिलेक्ट करेंगे और जो वो केपेबल है काम करने के लिए, उसको वहां पे वो डिपार्टमेंट में दे विल पुट. इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट्स. एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड according to predetermined standard in an impartial way. After selection, management should provide proper training program to increase their efficiency. So once management ने वो व्यक्ति को select किया, then that person should be given training so as to increase the level of their efficiency. Then we have the fifth point, that is functional organization. In this concept of Taylor's planning is separated from implementation. So ये Taylor planning part and implementation part, वो ये दोनों part को बहुत ही separately रखता है. That means planning is done by different people and the actual work is supervised by different people. So this says that जो वर्क को प्लान करता है वो पर्सन अलग होती है, और जो एक्चुअली वो साइड पे वर्क करते हैं वो पीपल दे आर डिफरेंट. बट वो पीपल के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है जो वो काम का सुपरविजन करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टूडेंट्स राइट देयर एग्जाम पेपर्स इन कॉलेज और द बोर्ड पेपर, सो देयर आर सुपरवाइजर्स. सो वैसे ही यहाँ पे भी देयर आर सुपरवाइजर्स टू सी व्हाट वर्क द employees and the workers are doing in the company and organization. Thus every worker will be supervised by two different sets of supervisors. So जो workers काम करते हैं in company and organization, वो लोग के ऊपर भी there are two supervisors who look at their work, how they do the work, कैसे काम करते हैं, काम complete होता है कि नहीं वो टाइम में, and everything of that sort. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They are categorized as under. So in total there are 8 who controls the work which is been allotted to them. So the A1 is at the planning stage. तो जब वो work को वो लोग plan करते हैं, at the planning stage there are 4 foremen. So the first one is the route
clerk who tells how work moves from one machine to another. So the root clerk tells about the machines कि वो कैसे होता है. Second is the instruction clerk, records instruction to complete the work. So second is it gives instructions about how the work is to be completed. And the third one is time and cost clerk, determines the time in which work should be completed and work out the cost. So time and cost clerk क्या करता है, he determines कि ये टाइम में इतना इतना काम होना चाहिए and what is the cost, कितना कॉस्ट लगेगा वो काम को complete होने के लिए. And the fourth one is discipline, ensures that the workers are working as per factory rules. So discipline is जो एक ऐसे व्यक्ति होता है दैट इज हु लुक्स आफ्टर कि जो द वर्कर्स और एम्प्लॉइज फैक्ट्री के रूल्स ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखता है. देन द B1 is at implementation level. First one is the gang boss, actually gets the work done. So gang boss is one person who looks that this work has to be completed. वो देखता है कि ये जो काम है वो कंप्लीट होना ही चाहिए कैसे भी करके. Then the second one is the speed boss, that is ensures that the work is completed in specific time. So speed boss ये देखता है कि ये वर्क जो है वो 1 घंटे में पूरा होना ही चाहिए. The third one is the repair boss, handles security and maintenance of mechanism. So इफ मशीन्स बीच में ख़राब हो जाती है, इक्विपमेंट्स बीच में ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करना या फिर वो मशीन को कैसे मेंटेन करना, इट लुक्स आफ्टर द रिपेयर बॉस. एंड द फोर्थ वन इज द इंस्पेक्टर, ensures that the work is done as per the specified standards. So inspector looks that whether the work is being done correctly or not. जो कुछ भी standards है वो work के steps है, systematic steps है, वो complete हो रहे कि नहीं, that they are following or not. So this is looked after by the inspector. According to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. So according to all this scientific management theory of the Taylor, जो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, ये पूरा अचीव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाउ वी हैव द लास्ट, दैट इज द सिक्स्थ वन इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output. Now in this, Taylor says that remuneration, मतलब जो कुछ भी wage, जो कुछ भी पैसा वो वर्कर को मिलेगा, that should be a very standard. It should be same. If a group of workers are doing one work, then जो वो लोग को पैसा मिलेगा, जो वो लोग को wage या फिर remuneration मिलेगा, वो it should be standard. It should be equal. Taylor suggests the differential piece wage system. Higher rates are offered to employees who complete the work more than the standard quality under this system. So also Taylor says that difference in the piece rate भी हो सकता है. अगर एक व्यक्ति वो काम को जल्दी खत्म करता है, टाइम लिमिट के पहले खत्म करता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव्स, थोड़ा ज़्यादा रेम्यूनरेशंस दे दो. On the other hand, if an employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wage. So on the other hand, the Taylor says that अगर एक व्यक्ति जो टाइम लिमिट दिया है उसको एक्सीड करता है, उससे वो टाइम लिमिट से भी वो ज़्यादा टाइम लेता है एक काम को कंप्लीट होने के लिए, फिर जो उसको वेजेस, जो उसको रेम्यूनरेशन मिलेंगे वो आप उसको कम कर दो. So this technique motivates the employees to attain higher standard performance and earn wages, that is remuneration at higher cost. So अगर हम लोग ये टेक्निक यूज करेंगे तो जो एक व्यक्ति है वो टाइम लिमिट से भी ज़्यादा टाइम लेता है तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा कि उसका जो काम है वो जल्दी से वो ख़त्म करे ताकि उसको भी हायर रेम्यूनरेशन एंड हायर वेजेस मिलेगा. सो
This is it with the techniques of scientific management. Also with this, I have completed the first chapter in Organization of Commerce and Management, which is the principle of management. Stay tuned for my next video on 12th ISTIC. Soon we will be heading into a new chapter. Don't forget to like, share, comment and subscribe to 12th ISTIC. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you. Bye-bye.